Is my voice clear? Ashish? Yes, you are audible. You will start at 35. Okay, so hello everyone. My name is Yash Pratap Singh and I am the current Vice President of IEEE RAS. I welcome you to this event, Navigating the University Journey in Canada. Sorry if my voice, because I'm having cold, so please bear me for some time. So without further delay, let me introduce you to the speakers of today's event, Ms. Ifrah Andleeb and Ms. Juveiria Khan. Both of them are currently pursuing their masters from Canada. Ms. Ifrah is pursuing her master's in electrical and computer engineering from University of Windsor, and Ms. Juveiria is pursuing her master's in mechanical engineering from York University. So both of them have excellent proficiency in their fields. So this will be a really informative session for students joining from various domains. And if we will have a Q&A session at the end, so if you have any query or uh, question, so you can mention it in the chat box, and we will take your questions one by one. So now I will request Miss Ifra to begin a presentation. Thank you. Hello, yes. Am I audible and visible? Yeah, but your voice is really low, I think. Can you hear me now? Yeah, Yeah. yeah, perfect, perfect. Okay. So I have to wait. I'll just present. Yeah. Is it visible? The screen? Yeah, yeah, it's visible. Okay. So hi everyone. I'm Ifra, and I think Yash introduced me. So thank you for that. Um, we will be taking a session on Canadian grad school application process. Let me first ask you guys if you are comfortable in Hindi, English, or like English or whatever. So you can just type it or say, yeah. Okay, both. Yeah, sounds good. Okay. So let's start with English. Uh, First, let us introduce ourselves. I am Ifra. I completed my bachelor's in electronics engineering from ZHCT this year, 2023. Here in Canada, I'm pursuing my fully funded master's in electrical and computer engineering from the University of Windsor, which is in Windsor, Ontario, like Canada. So before this, I was also a MyTax GRI. I think you guys know about MyTax. It's an internship in Canada. So I also did my internship in 22. Sorry, it's 23 here. So yeah, I did my internship in 22, and it was in ETS Montreal. So yeah, that's all about me. And I was also connected with RAS as a secretary. So yeah, that's a bit about me. Over to you, Juveiria. Yeah. Hello and assalamu alaikum everyone. I'm Juveiria Khan and I did my BTech in mechanical engineering from the ZSCT AMU, and now I am pursuing a fully funded master's in mechanical engineering from York University, Canada. And I was also MyTech GRI last year, and I did my internship from Ontario Tech University in Canada. Thank you. Okay. So before starting anything, let's understand कि हम लोग की PPT में what we will be covering. So सबसे पहले is the research field. We will talk more about it in the later slides. Then the funding opportunities here in Canada. Then some university ranking. Is it
important or not, then some admission requirements that you guys have to face, and the location problem in Canada. Yeah. So let's start one by one. First, okay, so let me see. Okay. Yeah. So first is a research. This is like the most important part of your Canada grad school journey, right? So सबसे पहले you guys have to start. It's like it's September already. Sorry, October already. So सबसे पहले you guys have to start making an Excel sheet. सबसे important is the Excel sheet. What you have to mention in the Excel sheet is the universities that you want to shortlist. um, like the good universities, bad universities तो कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी the low ranked universities, the upper ranked universities and all of that, right? So then you have to make a column and write the universities that you want to choose. Then the right program. Like मैंने अपना bachelor's किया था from electronics engineering, right? But here I am doing electronics and computer engineering. So why I chose it? Because my professor was in this field and I was ready to switch because most of the things I did in my bachelor's was related to computer science. So I was like, I had to make the choice. And Juveiria did her bachelor's in mechanical, so she's sticking to mechanical field. So यहाँ पे there are different types of programs that you can select. For computer science people, we have computer science, not engineering but computer science, like that, MS in computer science, right? So then you have to choose the right program. One more thing, before you try to switch your field, just remember कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि if you're switching then you have to take some subjects जो कि यहाँ पे bachelor's में पढ़ाए जाते हैं. Like since I am in electronics field, right? I was in electronics, so sometimes like the professor asked, अगर आप लोग के grades अच्छे हैं in your bachelor's in some courses, like we are taught DSA in electronics and all of that. So if your grades are good, then you don't have to take those subjects. But if you're switching to a different field, then you have to like study those subjects here also, which is a part of your result here. So ये point important है while selecting your problem. If you're ready to study more, then yeah, it's fine for you. Otherwise, don't switch your field. So then your field. There are two different things. The first thing is जिसमें आप लोग अपना bachelor's कर रहे हैं, right? And the second thing is your field. ज़रूरी नहीं कि वो दोनों सेम होंगे. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स ले लेते हैं and they make it their field. One of the example is me. Yash is also one of the example, and I think बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं. So you have to find out, like electronics में if you want to go in the VLSI field, so you have to make it your field और आपको उसी में अपने professor search करने हैं, which is the next point here. So your professor's research interest. What you can do is Google Scholar पे जाएंगे and जो भी आपको प्रोफेसर आपने अपने कॉलम में जिस भी प्रोफेसर का नाम लिखा है, जस्ट गो टू हिज गूगल स्कॉलर प्रोफाइल एंड लुक कि उसने लास्ट 10 ईयर्स में कौन सी फील्ड के, लास्ट 10 तो बहुत हो गया, लास्ट 5 ईयर्स में कौन सी फील्ड के रिसर्च पेपर्स मोस्ट पब्लिश किए हैं. इफ इट इज मैचिंग इन योर फील्ड or in your research area, then you can go for it. But if it's not matching, then I don't suggest anyone to go for it, because professor जो होगा वो आपको तभी help कर पाएगा जब वो आपकी same field में होगा. If he or she is not from the same field, then they might not be able to help you, और वो फिर आपके selection chances भी कम हो जाते हैं, right? So this is the research thing that you have to do. So just start by making an Excel sheet and put all these columns and then start applying, right? The next thing, funding opportunities in Canada. So मतलब ये mostly बहुत सारे लोगों का question होता है कि how are we getting fully funded internship? Fully funded masters. What is actually a fully funded masters? So it's not like कि आपकी पूरी fees waive off हो जाती है. वो बहुत ही शायद कम केसेस में होता है कि आपकी पूरी फीस इज लाइक आपको भरनी ही नहीं है. व्हाट दे गिव यू इज दे गिव यू डिफरेंट थिंग्स. लाइक
फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है. अगर आप लोगों को कुछ भी करना है, so you have to like pay for it, you have to do things for them, for the university. So here fully funded masters means a graduate assistant or a teaching assistant. Like Juveiria, in Juveiria's university it's called a teaching assistant, and in my university it's called a graduate assistant or GA or TA, right? So what we are given is we have to like हम लोग labs करते हैं अपने college में, and we have some bhaiyas helping us in the lab, right? We call them, sometimes we call them teachers, sometimes जो lab assistants होते हैं, all of them. So basically यहाँ पे क्या होता है, the lab assistants are not like men, women, they are basically students employed by the university. So अगर कोई bachelor's का course है mostly, तो उसके लिए जो masters के बच्चे होंगे, they will be their graduate assistant. And what you have to do is you have to go to their labs, help them with their labs. वहाँ पे कोई teacher नहीं होता, आपको help करनी है. Then you have to take office hours. Office hours is like डाउट सेशंस. तो आपको हर हफ्ते 2 आवर्स का ऑफिस आवर्स लेना है, या आई डोंट नो अबाउट जुवेरिया यूनिवर्सिटी कितने आवर्स का होता है, बट माइन इज 2 आवर्स. सो आई हैव टू टेक डाउट सेशंस, आई हैव टू पोस्ट लाइक आई एम सिटिंग हियर इन दिस रूम इन दिस सम ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट. सो ये आपके डाउट सेशंस हो गए. देन if a class has 70 students, तो आपको उन 70 के 70 students की copy check करनी है. So it's like you are the little teacher there. So this is one of the ways. और GAs की salary is also good. Like आपकी अगर if you're saving, तो आपका पूरा like accommodation, आपका grocery and all of that is covered in that. And sometimes if people save more, then one term fees भी हो जाती है उससे. Then a research assistant. So the difference between a graduate assistant and research assistant is that graduate assistant is helping with the bachelor studies and sometimes the master studies, but research assistant is like आप अपनी research के पैसे मिल रहे हैं आपको. Like PhD में students को पैसे मिलते हैं, वैसे ही MS में आपको भी अपनी research करने के पैसे मिल जाते हैं. So it's like the amount is also sometimes good, sometimes it's low. It like depends on your professor. Agar he's giving you more like more research assistant funds, then it's good. If he's giving you less, then it's also good. Like it's not bad. You're getting for what you're doing, right? So, and this starts after you start your after you start your research. Like you have to show them कि आप ये काम कर रहे हैं, and then they start it. Not like you are here and आपको RA मिलना start हो गया. It's like that. The next thing is entrance scholarships. So here your CPI comes into place. Like in some universities, it's not in all universities. Like it's there in Windsor. I don't know about York. Maybe it's there, maybe it's not. And in some universities, it's like agar aapki CPI it's above than 9 or sometimes 8.5 in some cases, so they give you some entrance scholarship based on your bachelor's marks. So it's like that. तो वो आपको मतलब जाते ही you get it. So it's like that. Then my tax fellowship. So this really helps a lot of people who are like applying for their studies, and this is one of the reasons people apply to coming to Canada for their masters, which is my tax fellowship. It's like they give you 15K for 2 hours, which is in most of the time half of your fees. So my tax fellowship, but the thing here is it's only eligible, like this fellowship is only for people who are my tax GRI. So if you are a third year student and you have applied for my tax and you get selected, so for your masters you get 15K scholarship, but it's like first come first serve. So as soon as you get the reply from the university, तो आप फौरन इसके लिए अप्लाई करते हैं. समटाइम्स ये ख़त्म हो जाती है at the end, but most of the time people get it. Then the next thing is university ranking. So this is like ये बहुत सारे लोग consider करते हैं and बहुत सारे लोग consider नहीं करते हैं. So in my case I didn't consider it because it's Canada, right? Every university here is good. So mainly जो people मतलब mainly जो लोग focus करते हैं, it's on the funding. And then maybe comes the university ranking. Sometimes you're trying to get into the top 5 universities in Canada. Sometimes you're like के admission हो जाए कहीं पे भी हो जाए, which are both fine. Like you can choose any.
सो अगर आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है एंड यू हैव टू लाइक search for them and all of them, so you can just google the university rankings in Canada and then you can get a list. अगर आपको वहाँ अप्लाई करना है तो आप वहाँ करिए. अगर आपको लगता है more than like above 15 होना चाहिए, that is also fine. अगर आपको लगता है below 15 होना चाहिए, that is also fine. But it mainly depends on the professor if you get a reply or not. So if you want to consider it, then it's fine. If you don't, it's also fine. Moving on, I think Juveiria, yeah. I hope I am clearly audible. Yeah. Okay, so type of masters offered by universities in Canada. So we have two type of masters, like कोर्स बेस्ड मास्टर्स एंड थीसिस बेस्ड मास्टर्स. तो कोर्स बेस्ड मास्टर्स थीसिस बेस्ड मास्टर्स में ये डिफरेंस रहता है कि कोर्स बेस्ड में आपको मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है. आपको कोर्स बेस्ड में रिसर्च वर्क भी करना होता है, आपको थीसिस पे वर्क करना होता है अपने जो आपका प्रोजेक्ट है, और साथ में कोर्स वर्क भी रहता है. And you will get the funding from your supervisor and many more scholarships, like earlier Ifra said. But in course-based masters, we don't have any funding from our supervisor. इसमें बस आपको कोर्स वर्क पे अपना काम करना है और लाइक कोई प्रोजेक्ट में भी मिल जाए, बट देयर विल बी नो फंडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम प्रोफेसर्स. सो यही एक मेन रीजन है कि हम लोग सब इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है हर चीज और हम लोग की फीस भी ज्यादा होती है, तो हम लोग कोर्स बेस्ड के बजाय थीसिस बेस्ड मास्टर्स ही प्रेफर करते हैं और वो उसमें और अपॉर्चुनिटीज बेटर ही रहती हैं कोर्स बेस्ड मास्टर्स से. Okay. So the admission requirements, we have to see every university have different requirement, but the basic requirements are the transcript, LOR, SOP, and the English proficiency requirement, which is IELTS and CV और research paper. So अगर आप अपने फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको थर्ड ईयर तक की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और अगर फाइनल ईयर के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो फुल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है. उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि आप उसमें उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या पर्पस है अप्लाई करने का, आपका रिसर्च एरिया क्या है, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है उसके अंदर. एंड you should have 2 or 3 LORs. It totally depends on the requirement of the university. Some university want only 2 LORs and some want 3 LORs. And the most important thing is IELTS requirement. इस पे बहुत फोकस करने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कनाडा में 6.5 IELTS स्कोर चाहिए होता है. तो हमें यही टारगेट करना चाहिए कि उससे अबव ही हमारा स्कोर रहे. 6.5 से बिलो कोई यूनिवर्सिटी यहाँ एक्सेप्ट नहीं करती IELTS स्कोर. और वैसे टॉइफल भी होता है, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी IELTS ही प्रेफर करती हैं. एंड देन यू हैव अ प्रॉपर CV and research paper. It's not mandatory to have research paper for your masters. It will only increase your chances for selection. अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है then don't worry, you still can apply. बट अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए. So next slide. So the location. ये 3 फैक्टर्स हैं लाइक वेदर, लैंग्वेज, हाउसिंग एंड एकोमोडेशन, जो हमें कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त या एडमिशन लेते वक्त देखने चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ का. लाइक वेदर, लाइक कनाडा इज अ वेरी कोल्ड कंट्री, तो यहाँ पे कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हो जाता है विंटर्स में. तो प्रेफर करना चाहिए कि उन यूनिवर्सिटीज में ना जाएं क्योंकि बहुत फिर डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें. तो जैसे ओंटारियो है यहाँ प्रोविंस, उसका वेदर ठीक रहता है. तो अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे वेदर कंडीशन भी अच्छी है तो वो प्रेफरेंस रहनी चाहिए. एंड द लैंग्वेज बैरियर, इन सम cities in Canada you can face language barrier, like in Montreal. वहाँ पे सिर्फ फ्रेंच चलता है, फ्रेंच चीजें होती हैं वहाँ, फ्रेंच बोलेंगे वहाँ, आपको फ्रेंच में ही सब कुछ होगा. लाइक इफ्रा ने वहाँ से इंटर्नशिप करी है तो वो मतलब उस चीज को समझ सकती है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर रहता है, बट नॉट इन ओवरऑल कनाडा. बाकी जगह इंग्लिश चल जाएगी, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज को कंसिडर करना चाहिए.
देन हाउसिंग एंड अकोमोडेशन. सो इट्स लाइक यहाँ पे कुछ जगहें हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं. तो अगर उसको देखा जाए, अगर आपकी फंडिंग आपको अच्छी मिल रही है, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं, तो ठीक है. तो लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका हाउस अकोमोडेशन का क्या रेंट वगैरह क्या रहेगा, और डेली एक्सपेंसेस क्या होंगे, मंथली ग्रोसरीज कितनी होंगी. तो ये सब चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप उसको अच्छे से ले सकें. नेक्स्ट स्लाइड. सो टाइमलाइन. इसमें अगर ये जो टाइमलाइन है, दिस इज फॉर फॉल. उसमें हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जून जुलाई से आप अपना स्टार्ट कर दें रिसर्च करना कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिसर्च एरिया क्या है. उसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना किस फील्ड में. तो आपको पहले उस चीज के लिए क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है, क्या करना है आगे. तो वो सब चीजें आपको अर्ली जून से स्टार्ट कर देनी चाहिए. देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज, द प्रोफेसर्स, कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या आपका प्रोफेसर का कैसे इंटरेस्ट मैच करना है. तो उसमें बहुत सिंपल रहती है चीजें कि आपको कुछ नहीं करना है. जैसे आप इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी in any specific university, like I can show, I can present. Is my screen visible? Yeah. Okay, so you just can search mechanical. तो ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी का आप सर्च करें, उसमें सारे प्रोफेसर की डिटेल्स आ जाएंगी. यहाँ पे जो मैकेनिकल जो आपके स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, तो उसमें वन बाय वन हर प्रोफेसर को आपको देखना है कि उनका रिसर्च एरिया क्या है. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे उनका रिसर्च, हर प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन होगा. तो उसको एनालाइज करिए कि आपकी रिसर्च इंटरेस्ट से इनका मैच कर रहा है या नहीं. उसके बाद उनकी कुछ पेपर्स पढ़िए. और लाइक इफ्रा ने पहले बताया कि एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए. उससे ये फायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली किन प्रोफेसर्स को मेल करना है. तो यू कैन मेक अ एक्सेल शीट लाइक दिस. It's not visible, Juveiria. Oh. Is it visible now? Yep. Is it visible now? Yeah, it's visible. Okay. So you can maintain an Excel sheet like this. Write the university name, and in front of this write the professor name. जो भी आपको लगता है कि हाँ इनका रिसर्च एरिया मेरे से मैच कर रहा है, उनका ईमेल एड्रेस, वेब लिंक, एवरीथिंग, एनीथिंग यू वांट to add, you can write in this Excel sheet. Maintain Excel sheet. ये बहुत हेल्पफुल रहेगा फिर मेल वगैरह करने के लिए. Slide. Yeah, I'm sharing. So from June and July you can decide कि आपको किन प्रोफेसर पे अप्लाई किन प्रोफेसर को मेल करना चाहिए. एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए. उसके बाद सितंबर तक आपको मेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक सारे स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं फिर उसके बाद बहुत डिले हो जाता है, फिर प्रोफेसर्स के रिप्लाई नहीं आते हैं. तो इसलिए बहुत टाइम लगता है सब प्रोसेस में. सितंबर तक यू हैव टू स्टार्ट मेलिंग द प्रोफेसर्स. एंड इन नवंबर आते आते आप अपना आइल्स क्लियर कर लीजिए. आइल्स की प्रिपरेशन में बहुत टाइम नहीं लगता. उसमें तो स्टार्टिंग में तो डर लगता है देने से पहले, बट एंड तक
आपकी जब तैयारी अच्छी रहती है, मुश्किल से 15 से 20 दिन का टाइम देना चाहिए आइल्स की प्रिपरेशन के लिए। जब हो जाए नवंबर तक उसको दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेडेक होता है कि आपने आइल्स नहीं दिया, आइल्स भी देना है अब। तो जब एक बार आइल्स हो जाता है तो सुकून हो जाता है। फिर मोस्टली फॉल सेमेस्टर के लिए जो डेडलाइंस होती हैं वो दिसंबर और जनवरी तक ही रहती हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वहाँ की डेडलाइन क्या है और कितना पहले आपको अप्लाई करना है। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर थीसिस बेस्ड मास्टर्स, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं रहता कि आप डेडलाइन एंड तक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने अगर आपको अप्रूव कर दिया तो आप अप्लाई कर लें। लेकिन थीसिस कोर्स बेस्ड मास्टर्स के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रहता है कि जितना आप पहले अप्लाई करेंगे उतना आपके चांसेस ज्यादा हैं एडमिशन से, तो इसलिए डेडलाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस सब कंप्लीट कर लीजिए। Yeah. So I'll be taking you through what to write in the email. Like ये बहुत लोगों का इशू होता है, like हम क्या मेंशन करें, क्या मेंशन नहीं करें, कुछ अटैच करना है ईमेल में या नहीं करना है. So when you're done with your Excel sheet and you want to start emailing the professors, तो बहुत जनरल मतलब ईमेल ड्राफ्ट होता है. Like the introduction is the general way. Like introduction में आप क्या लिखोगे? About you, in which year you currently are. Like I'm a third year student, I have a CPI of this itna, and I am a student of this university, which is like a very renowned university in India. Agar if AMU की rank in the top 10, तो आप वो भी mention कर सकते हो and all of that, just to tell them that you are from a good university and you have a nice CPI, right? Then in the second paragraph of the mail, ये थोड़ा specific लिखना चाहिए. Like sometimes when you're applying to like a professor, तो उनकी fields में कभी-कभी जो उनके keywords होने चाहिए वो हमारे research interest वाले paragraph में होने चाहिए. Like if in his profile उन्होंने लिख रखा है AI, तो आप AI मेंशन करें. अगर उनकी प्रोफाइल में बहुत स्पेसिफिकली लिख रखा है डीप लर्निंग इन हेल्थ केयर, तो आप वही मेंशन करें. सो रिसर्च इंटरेस्ट में यू हैव टू राइट कि आई एम इंटरेस्ट, लाइक this is my area of research which aligns with your area of research, and I have, if you have published papers then it's very good, if you don't then also it's fine. ज़रूरी नहीं कि papers होने चाहिए, but mostly 2 papers is fine. Like इससे ज़्यादा भी you don't need. But if you have to, it's like you can mention that you did a research on these papers and you published these papers and all of that. Then internships, अगर आपने internship की है, if it's international then it's very good. Like आप उस international project को भी you can explain what you did, and if it's not international, it's national, in some company, in some startup or whatever, you can write it with a little detailed description. Like बस ये नहीं लिखना कि internship की थी, यहाँ की थी, because they don't know what the company is about, what they are doing. So you have to explain what you did, what was your part. So थोड़ा specific होना पड़ेगा. Then one very famous way of writing like this part is, आप ये बोल सकते हैं कि you read one of the research paper of the professor, और आप अगर you have some idea कि उनके research को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, so you can mention that. While I was reading your research paper, I saw you have mentioned this and I would like to extend your research. और आप कुछ idea अपना वो कर सकते हैं एक्सप्लेन. अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप बस मेंशन कर दीजिए दैट यू रेड द रिसर्च पेपर एंड इट अलाइंड विद योर रिसर्च एरिया, ऐसे करके. एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर. एंड देन रीजंस टू जॉइन द प्रोफेसर्स रिसर्च टीम, विच इज लाइक कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लाइक and why do you want to pursue your masters under him or her. तो उसमें भी वही सेम चीज़ होगी, मतलब do not repeat it, but yeah, just write it in the third paragraph कि you are interested because, और आपके reasons जो भी हैं, mostly वो because it aligns you with your research area, वही होते हैं. So this is like a very brief description of the email that you can draft, and it should not be very long. Like ये नहीं कि ईमेल में लिख शुरू किया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ईमेल. इट शुड बी स्मॉल, लाइक थोड़ा
थोड़ा छोटा सा ही रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. Then you can also attach your transcripts, which we also told. Then you can also like attach your CV. Your CV should be like aligned with their research. Or one thing I've learned coming here is, if you're applying to a different like job role, like because internship roles में अगर आप apply कर रहे हैं और यहाँ पे if you want to apply to a masters, then like ड्राफ्ट योर सीवी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर्स इंटरेस्ट. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, बस एक सीवी बन गई हमारी एंड इट्स फाइन, अब वही हम हर प्रोफेसर पे अटैच कर देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कम से कम यू हैव टू लाइक increase your skills in some professors. Sometimes you have to add a project that is related to their fields project. So ये one of those points हैं जो लोग भूल जाते हैं, but if you like take care of them, then I think it will increase your chances. So yeah, that's all from our side. हम लोगों ने थोड़ा brief रखा था इसको so that you guys can get a chance to ask questions. So if you have any, then just type it. Or there is you one can question also, I think from Iqbal. Yeah. He's mentioning I think he's mentioning, is there any fully funded scholarship? I think he's mentioning if there is any single fully funded scholarship. I want to answer this. mhm. It's like it's totally depend on your supervisor or the university. In my case, I am getting funding which cover my tuition fees as well as my living expenses. But हर यूनिवर्सिटी में ये हर सुपरवाइजर के पास इतनी फंडिंग नहीं होती, तो ये आपकी लक की बात है कि आप जिस सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं उसके पास कितनी फंडिंग अवेलेबल है. तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रखने होते हैं कि जहाँ अच्छी आपको वो मिल जाए फंडिंग, आप वही सिलेक्ट कर लीजिए. जैसे मुझे फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मिली है कि मेरी फीस भी कवर हो रही है और लिविंग एक्सपेंस भी उसमें कवर है. Yeah, I will also add to this. Like, I'm not getting like a fully funded scholarship, as in कि वो मेरी फीस ही कवर, मतलब पूरी फीस ही मेरी वेव ऑफ हो गई है. It's like I have to pay the fees, but I have to pay it through my tax, through RA, through GA, and all of that. So when I calculate all of it and the amount I'm getting, तो वो पूरी cover हो रही है. So like in Juveiria University, उसकी पूरी wave off है and सब कुछ wave off है. But in my university, I have to like do some things and then they will pay me. It's not the same like that. So if you और थोड़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है. So it's not very easy to get this, even if you're getting like 70 to 80% of your scholarship of your fees, then it's fine. I think you're good to go. Okay, so I think second question is from Zaid bhai. Hello Zaid bhai. It's fine. He's Leave asking it. what if I don't get GA, TA or RA from the first semester? Are there any other funding opportunities? Then you have to search for part-time. Then part-time culture in US, I don't know, Zahid bhai knows it best, but part-time culture in Canada is like, it depends on the place that you're going. If you're going in a small town, then it's like lower opportunities for part-time. If you're going in a very big city like Juveiria is, then I think that the chances are high there. Okay, so next question is from Yusuf. He's asking, how's the research area in AI in health, also from a job perspective? AI in health. So I think here, if you are like doing your masters in this field, and if you're doing it under a professor who has connections with the with the medical and all of that, then it's good for you. Agar you are doing because here referencing is very important. Like आप लोगों को अगर reference दे रहा है आपका professor, तो बहुत सही रहता है. Like my professor is in autonomous vehicles. So if I want to work under autonomous vehicles, so he already has connections and he can refer me to the company. And my MyTax professor was in AI in healthcare, so he was like connected to a medical. So I think it would be helpful for his students अगर वो उन्हें refer कर देता है. वरना तो AI in healthcare, I think it's good, but it's not like it's the field जिसमें research almost मतलब
हो ही रही है, so I won't say कि बिल्कुल बेकार field है, don't go into it, but there are other fields also that you can explore and which has like more chances of getting a good job and all of that. Yeah, so Windsor is also like on the border of US, and it's like Windsor and Detroit. So Detroit is also like the hub for autonomous vehicles and all of that. So one of the reasons for choosing Windsor was this also, because my professor has connections there, so maybe if I work hard and if I like work well, then he might refer me there also. So yeah. Okay, so next question is from Wasim. If professors will approve, then only we can get admission, get a chance to get admission in those universities. Like after professor's approval, then what will be the next step? I think he's asking like, is mailing important? I think that's या the. इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है और वो भी एक ह्यूज अमाउंट होता है। अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं विदाउट एनी अप्रूवल तो चांसेस 50% है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा। बट इन सम केसेस सम प्रोफेसर सेज कि आप पहले अप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। बट मोस्टली केसेस में यही होता है कि स्टूडेंट्स पहले प्रोफेसर से अप्रूवल ले लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। वो एक बेटर ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर अप्लाई करने का। कुछ केसेस में होता है कि आपने डायरेक्ट अप्लाई किया, प्रोफेसर से अप्रूवल नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट मे बी वो आपको कोर्स बेस्ड मास्टर्स हो, थीसिस बेस्ड मास्टर्स ना हो। तो थीसिस बेस्ड मास्टर्स के लिए यही प्रेफर किया जाता है कि पहले प्रोफेसर से अप्रूवल ले लीजिए फिर अप्लाई कीजिए। मैं भी इसमें क्वेश्चन ऐड कर लूँ कि मतलब अगर कोई बंदा MENG प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है तब भी ये इम्पोर्टेंट है ईमेलिंग? नहीं नहीं, तब इम्पोर्टेंट नहीं है, तब आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के उस पर अप्लाई करना है और वो फिर यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करेगी, उसमें प्रोफेसर का कोई रोल नहीं होगा। Okay, so next question is from Yusuf. Why Canada, not the US? Given the advantages of US, like better opportunities. Question of the year. Why Canada? Like, I will tell my reasons and Juveiria can tell her reasons. One of the most important thing is funding opportunities. Like, you get it easily here rather than US. And if you have funds, like if you can afford a US fees, then obviously US is better because they have like amazing opportunities per job and all of that. But if you want to have a fully funded MS, then it's easier to get it in Canada. This is one of the reasons. But yeah, if you can fund your tuition fees, then US is better, no doubt. The next thing is PR is very easy in Canada. Like, you are a student, you work for 2 to 3 years, you get a PR, and उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. And if you want to settle in a country, मतलब other than India, and you want to study abroad also, then Canada is the best. और अगर आप US में you want to think, so there are different ways to get a green card. वो बहुत मुश्किल होता है, like it takes years and years to get a green card. This is the second reason. And third reason is some cities are like on the US and Canada border, and if you get US visa, which is very easy if you're a student here, and if you are a PR here, then it's very easy to get a US visa. So what you can do is, like some of my seniors, what they do is they are like they studied here as a master's student, but they are also working in like in cities like Detroit, like US cities, and they are earning there. But what they are doing, they are done with their job, they come back to Canada, and they are spending it here. So they are earning in dollars and spending it in CAD, which is also like a win-win situation. So like these are the three reasons why I would say Canada. Juveiria, if you want to add. No, it's the same reason, funding and the फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको पीआर इजीली मिल जाता है आई थिंक 2-3 years बाद। और फंडिंग, मेन चीज फंडिंग की है, क्योंकि बहुत चीजें बहुत फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है फंडिंग का। तो जहाँ सबसे अच्छी फंडिंग मिल रही है वहीं जाना प्रेफर किया।
और प्लस लास्ट ईयर इंटर्नशिप करी थी यहाँ पे, तो यहाँ का कल्चर सब कुछ सबका आइडिया था, तो इसलिए। और यहाँ ना बेटर। Okay, so next is again from Zaid Bhai. Can I work in McDonald's as a Leave part it. time? Leave it. Leave it. Okay, so next Sarem. Do you know any specific university other than Ryerson which does not provide funding for masters? आई थिंक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उसमें भी मास्टर स्टूडेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती यूनिवर्सिटी, तो प्रोफेसर्स के बाद ही बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं फंडिंग के लिए। Okay, so next is from Yusuf. Do you think it would be wise to go to a university like University of Alberta, given a fully funded masters under a professor with connection with doctors and does interdisciplinary research at the top level? Will getting a job be hard? I think it's a good opportunity if your professor is working in the same field as you and he has connections. Then it's like the best thing you can do. Like you can choose. And Alberta is obviously a good university here. Okay, so next is it still possible to get a good college even if we are not selected for MyTechs? How good are the probabilities and what should we do in this condition? Do you want to answer? यस, इट इज़ पॉसिबल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने माइटेक्स इंटर्नशिप नहीं करी है, बट उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप माइटेक्स करें तभी आपको प्रोफेसर सिलेक्ट करेंगे। इट जस्ट आप कितना अच्छे से प्रोफेसर को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप उस उनकी रिसर्च वर्क में या उनके लैब में काम करने के लिए सूटेबल हैं। तो आपको उतने अच्छे से उनको कन्विंस करना है बाय योर ईमेल्स और योर सीवी। तो बस यही मेन इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपको प्रोफेसर को कितने अच्छे से कन्विंस करना है। Okay, so next is how to increase chances of selection for MyTech's internship. The deadline is already gone, but yeah, if you are in second year, I think Aman hasn't. Okay. So if you want to apply in the next year, then what you can do is you can start maintaining your CV, and you can do some research projects. You can apply for some internships, and you can at least have one paper if you can in your research field. Because MyTax, as the internship name suggests, it's a research internship, so it really increases your chances if you have research paper, because most people in third year or second year don't have research papers. So if you have them, then आपके already chances बहुत high हो जाते हैं. Plus you also have to maintain your CPI, because I don't know, it's a myth or not, but it's important to have a good CPI to apply abroad, because बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6-7 CPI पे भी हो जाता है, but it's difficult. I don't know हो जाता है या नहीं, but if you have more than 8.5, then it increases your chances for MyTax as well as masters. So yeah. और माइटेक्स ने तो अब उन्होंने क्राइटेरिया ही कर दिया 8.5 ही मिनिमम आपके सीपीआई होने चाहिए। Exactly. Okay, so next is future plans after masters. The way you want to answer? यस, फ्यूचर प्लान्स मास्टर्स के बाद इंशाल्लाह जॉब करनी है, बाकी जो किस्मत में है, बट फोकस जॉब पे ही रहेगा। Yeah, exactly. Because we are here and like I don't know, like in my university, you start applying, like when you come here, you start searching for jobs, you start searching for internships, because in some courses there is an opportunity called co-op, which is like you have to skip 2 semesters and you have to go work for a company. Or उन दो semesters में you don't have to pay the fees, you just have to work in like it's a part of your course, but it's not necessary in my course. But if you are applying for University of Windsor in computer science, then it's necessary to have a co-op and work. So if you are doing an internship in some company, तो आपके वहाँ पे भी chances बढ़ जाते हैं to get a full time job, because you are also like you also worked for them, so it increases your chances to get hired. और एक चीज मुझे यहाँ आके और पता चले कि मास्टर्स के बाद अगर आपको एकेडमिक फील्ड में जाना है तो मास्टर्स के बाद पीएचडी करिए, बट अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो पीएचडी करने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस हो जाती हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं उसके लिए।
और पे स्केल सेम रहेगा, अगर आप मास्टर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के बाद, पे स्केल सेम है, बट समटाइम्स आप ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर आपने पीएचडी कर रखी है, ये मुझे यहाँ आगे पता चला। ओके ओके, एक क्वेश्चन मैं भी इसमें पूछ लेता हूँ कि मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी is like India, like getting jobs in Microsoft or Google in India is really hard. So what's in Canada? It depends on the like it depends on your networks. यहाँ पे आके you realize that networking is super important. Like if you have some alumni from the university, or if sometimes what happens is आप एक lab में हैं, एक research lab में हैं, and you have some master students like आपके senior हैं वो, and they get they crack Google, Microsoft and all of that, and you are in connection with them, like यू कीप आस्किंग देम और अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं, बहुत सारा यहाँ पे होता है इंटरनल रेफरेंसिंग के थ्रू. सो व्हाट वी गेट इज हम लोगों को लिंक्डइन पे सर्च करते हैं, हमें दिखता है कि ये जॉब्स हैं, राइट, बट इंटरनल रेफरेंसिंग से क्या होता है, समटाइम्स कोई एक छोटी सी जगह खाली हुई, मशीन लर्निंग इंटर्न, सो दे वोंट पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. व्हाट दे विल डू इज इंटरनल रेफरेंसिंग, लाइक अपने एम्प्लॉयज से पूछेंगे, या समटाइम्स if the employee is a good friend of yours, or like you are in connection with them throughout, so they remember you, they like refer you, but referral tak unka kaam ho chuka hai. What you have to do is now you have to perform. आपको इंटरव्यू में you have to prove that you are the best candidate for the job. अगर आप नहीं हैं, चाहे आपको कितना ही रेफरेंस मिल चुका है, वो आपको नहीं लेंगे, because उनके लिए उनकी कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर रेफरेंस. बट दिस इज लाइक वन स्टेप, you are one step closer to getting a good job in Microsoft, Google. So yeah, it depends on networking and also your skills. Yeah. Okay, so next is from Sarem. Is 1.5 page CV sufficient, or should I increase it? Should I mention all the projects in CV? Joy, you want to answer or I will? The mic is off. Mic. Okay, sorry. 1.5 CV is sufficient. It's like बहुत ज्यादा चीजें भी सीवी में डालने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. प्रोफेसर को उतनी ही चीजें दिखानी चाहिए जो आपको लगता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है. तो अगर ये कि हम बहुत बड़ा सीवी बना लें और वो उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. बट टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए जो उन प्रोफेसर को अट्रैक्ट करें, उनको देख के लगे कि हाँ, इस स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी है जो मुझे चाहिए, मुझे मेरे स्टूडेंट में चाहिए. तो इसलिए सीवी बड़ा करने से नहीं होता कुछ, बस आपका सीवी अच्छा होना चाहिए. 1.5 is very sufficient. Yeah, and it should not be more than 2. Okay. Yeah, not more than 2. Okay, next is, can research papers projects compensate for CPI? Okay. So your CPI should be at least above than 8, because in most universities यहाँ पे like उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोग को 80% मार्क्स इन योर बैचलर्स होना चाहिए या 75% मार्क्स इन योर बैचलर्स होना चाहिए. सो इट डिपेंड्स, like in some universities it's around 85 in some top level universities, and in some it's like 70-75. So it can suffice when you're applying, like when you are emailing a professor, but they also tell you face to face ke if you don't have good grades, then it's tough to get admission. Okay, I think next question is same. How are you guys finding the job process market? Plenty or scarcity of job? I think I already answered that. Okay. Next is, which faculty in mechanical engineering section in ZSCT who can guide for MyTech's internship? I think Juveiria. Actually, I also don't know the answer, because हमने तो सीनियर्स की हेल्प से खुद से ही इस इंटर्नशिप पे अप्लाई किया था. बट किसी भी फैकल्टी को आई डोंट थिंक इसके बारे में पता होगा. अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप अपने जो सीनियर्स हैं जो कर चुके हैं उनसे जाके पूछ लीजिए. मुझे नहीं लगता कि फैकल्टी में से किसी को आइडिया है इसके बारे में. Okay, so next, how can applicants tailor their SOP to the specific program and university to which they are applying? वो तो मतलब it depends on the keywords जो भी आप लिख रहे हैं in your SOP. Like SOP can be same, like उसका introduction हमेशा same होगा, the conclusion will also be same. The thing that will change, like
आई ऑलरेडी टोल्ड इन द ईमेल, उसका बीच का जो रिसर्च एरिया होगा एंड वाई यू वांट टू अप्लाई, बिकॉज हर हर प्रोफेसर के अंडर आपके पास सेम रीज़न नहीं होगा. समटाइम्स उन लोगों ने ऐसा कुछ अपनी वेबसाइट पे लिख रखा होगा विच इंस्पायर्स यू टू जॉइन देम, तो आप वो रीज़न लिख सकते हैं. एंड प्रोफेसर्स actually take it into consideration agar, because they have here their online websites. So what you can do is आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं and you can see if they are hiring or not. And उन्होंने लिखा होता है some, like while I was like emailing a professor, तो उन्होंने लिख रखा था कि there was specific words, वो उन्होंने बोला था कि you have to mention it in the subject so that I know you read my website. तो वो कहीं शुरू में नहीं लिखा था उन्होंने, वो बीच में लिखा था कहीं. सो समटाइम्स प्रोफेसर्स भी ट्रिक कर जाते हैं कि आपने उसको पढ़ा है या नहीं, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट को खोलेंगे जिन्होंने उनके कीवर्ड्स लिखे होते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लाइक पर्सनलाइज योर एसओपी और email and all of that. Yeah. Okay, next is from Mikhail. Are there any scholarships in Canada that we can apply for before getting admitted to a college? नो, बिकॉज किसी भी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए वो ऑफर लेटर मांगता है. अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहां से आपको पता चलती है स्कॉलरशिप, बट अगर कोई और स्कॉलरशिप है उसके लिए भी आपको ऑफर लेटर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का. विदाउट एनी ऑफर लेटर स्कॉलरशिप पे आई डोंट थिंक अप्लाई कर सकते हैं. Okay. Yeah, and mostly it's for like international students के लिए you can search. Like while I was in India, I didn't know, but sometimes what happens is यहाँ पे region wise scholarships होती हैं, like Ontario grad internship, some grad, you get it in the email when you come here. Like आपको उसी email पाएंगे, like Juveiria said, but आप search कर सकते हो about this, maybe you get some internships. But I like searched for it but I couldn't find any. Mostly आपको यहीं आके सारी पता चलती है. Yeah. Okay. So next is, can you tell good publication is important for the paper, because I have a research paper but not a nice publication. Good publication, like in IEEE, if your research paper is like published in IEEE research papers and all of that, like, so it will be better. But if you have a research paper, but I don't understand what do you mean by a nice publication. So if it's like in some national conference or something, so it's better than zero, right? तो आपके पास कुछ तो है at least, so it will help but not that too much, I think. Okay, next is, do you have any WhatsApp group of seniors who is studying abroad and can guide for international internships? I think we can make. Yeah, if you guys are in connection with seniors, so yeah. Okay. Next is it necessary to write a SOP in an email? Wouldn't it make the email long and difficult for a professor to read? No, not to write SOP in email. It's like बस आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं अभी. अगर आप 3rd 4th ईयर में है तो बता दीजिए किस यूनिवर्सिटी में है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा रिसर्च एरिया, मतलब कि आपने किस चीज पे काम किया हुआ है और आपको क्यों इंटरेस्ट है, मतलब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोफेसर को जो उनको देख के लगे कि हाँ ये हमारी फील्ड्स हैं. तो थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, नॉट द होल SOP. And sometimes what students do is they attach their SOP as an attachment with CV transcript and all of that. तो आप अपना email 2-3 लाइन का लिखिए and you can just attach your CV. Oh sorry, SOP. Cover letter, you can write a cover letter also. उसमें भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं. Okay. Next question is from my side. Like you mentioned in the slide that there are entrance scholarships. So do we need to apply during the application form, or like it is included in the application form? No, it's like when you are applying and you get selected, so they just look at your transcripts. अगर आपका it's above than their mark, then they give you eventually, and if it's not, then आपको कुछ apply नहीं करना उसके लिए. Okay. Like in my university, I also have entrance scholarship, but वो यहाँ पे ये कि सारे applicant उसके लिए eligible हैं, but वो आपको जब मिलेगी जब आप उनको एक्स्ट्रा चीजें से, आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है या किसी रिसर्च वर्क के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स हैं या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जिसके लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा.
तो वो इंटर्नशिप मुझे जब वो स्कॉलरशिप मुझे जब मिलेगी जब मैं उनको ये चीज़ें दिखाऊंगी कि अच्छा मुझे इस इंटर्नशिप पे जाना है या मुझे इस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। तो मेरे यहाँ थोड़ा अलग सीन है इस चीज़ का। Okay, okay. Or and my question कि TOEFL or IELTS, like I am preparing for TOEFL, so will my TOEFL score be valid in like most of the Canadian universities? Yeah, it's good. If IELTS and TOEFL both are fine. Okay. Even GRE is fine. But वो मांगती नहीं है universities. Mostly IELTS ही मांगते हैं. Okay. Okay, if you guys have any other question. Okay, next is can you please tell briefly why University of Windsor and why York? I think I told you guys my reasons. Like one of the reason was it's closer to the US border. The other reason was I was applying while I was applying. This is the best funding opportunity I got. Like it covers everything. I don't have to pay for anything extra. So it is covering. The main thing is funding for me, and the second thing is it's the job opportunities is good. The third thing is my professor is a senior professor. He's like some chair of autonomous vehicles and somewhere there in IEEE. So I think his referencing power is might help me, and yeah. So these are the reasons for choosing Windsor. या Okay. सेम रीजन फॉर योर कि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली एंड इट इज इन टोरंटो जो कि काफी अच्छी सिटी है एंड यही रीजन था मेरा बस आने वाली फंडिंग यहाँ अच्छी मिली। Okay. Next is if there is publication of a paper in 6 months from now, should I opt it or not? 6 months. I think every research paper takes around 6 months. Huh? Yeah, obviously. What you can do is you can write it in your CV like under process, and if it's submitted, then you can write in review, and if it's published, so yeah, it's published. So Okay. we Next have is how some. important is GRE score for MS? When you are applying for Canada, it's not important at all. Just take the easy way, apply for IELTS. You get 8 very easily in IELTS, and the minimum requirement is 6.5, which is more than enough. So I think, yeah, IELTS is good here. Okay, so next is so just a small follow up. How do University of Toronto or UBC compare to Windsor? Does college tech work for jobs? I think we can tell you this after getting a job. If it works, नाइस। yeah. Because